So now let us see the last case. It is a special case in Routh-Hurwitz table. Now what is this special case? We will understand this case with the help of an example directly, right? हम एक example लेंगे. If I am not wrong, this will be your example number 9th. If I am not wrong, it will be your example number 9th. Again, one important case. This is the last case. इसके बाद पूरा Routh-Hurwitz table के सारे cases खत्म हो जाते हैं. After this, we will start solving previous year GATE questions for both EC electrical, engineering services question. अगर कोई ISRO, DRDO में और कई आए questions in civil services also, we will start. So after this case, we have done with the Routh-Hurwitz criteria. Now please write down case number 2, special case of RH table, special case of Routh-Hurwitz table. So we are given a characteristic equation which is s raised to 4 plus 2s cube plus 2s square plus 4s plus 8 is equal to 0. Is equal to 0. What is the question? He is asking, find the number of right hand side poles. कितने poles है on right hand side of S plane, and is asking to comment upon stability. Again, I am telling you, कोई भी question अगर Routh का आएगा, for any question asked on Routh-Hurwitz criteria, first is to analyze the given characteristic equation. सबसे पहले देखना है कि वो दो conditions satisfy करता है या नहीं करता है. Then only we have to proceed for developing the Routh-Hurwitz table. First condition, is there any coefficient missing और कोई s का power missing है? s raised to 4, s cube, s square, s. So none of the coefficient are 0, means no any s का power is missing. So first condition is satisfied. Second condition, क्या सारे coefficient की sign same है? सारे negative तो negative, सारे positive तो positive. Is there any sign change? So as you can see, all the coefficient have the same sign, which is positive. So there is no any sign change in the given characteristic equation. So we can say it satisfies the second condition. Since both the conditions are satisfied, we can say the given characteristic equation is valid equation, and now we should proceed for developing the Routh table. So we'll start with our basic table. CE दिया है s raised to 5 है, s raised to 4 plus 2 s cube plus 2 s square plus 4s plus 8 is equal to 0. Yes. Now ये special case क्या है? In just 5 minutes you will understand. S raised to 4, s cube, coefficient 1, 2, 2, 4, 8. There is no any other coefficient, so 0. S square, s square. 2 into 2 is 4. 2 into 2 is 4. 4 minus 1 into 4 is 4. 4 minus 4 is 0 upon 2. So ये आएगा 0. तो ये आएगा 0. Now close this 2 and 4. 2 into 8, 16 minus 0 upon 2. So यहाँ पे 8 ही आएगा. You can use the shortcut trick 1, 2, 8, 0. अगर ऐसा होगा combination, so last element आएगा, right? And again 0. Again 0. So s square का row कितना है? What are the elements of s square row? 0, 8, 0. Is this odd row 0 condition? If you see carefully, is this odd row 0 condition? No. Why? Because of this 8. Odd row 0 condition कब होता है? सारे elements 0 होने चाहिए firstly. सारे elements 0 होने चाहिए firstly. लेकिन
कौन से होने चाहिए? ऑड रो के एलिमेंट्स 0 चाहिए. दिस इज नॉट एन ऑड रो, इट इज एस स्क्वायर. सो ऑड रो 0 कंडीशन नहीं है ये, बिकॉज 8 प्रेजेंट है, 8 is present here, so it is not an odd row 0 condition. Now if you go ahead and solve the table, what will happen? 0 into 4, 0, minus 8 into 2, 16 upon 0. So सारा आंसर आएगा आपका infinite, 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 infinite. Why? Because we always divide by 0. स्टार्ट किया है दिस एलिमेंट से एंड वी डिवाइड बाय द सेम एलिमेंट, तो पूरा टेबल आपका, पूरा ये एलिमेंट आपके इनफाइनाइट होंगे, राइट? इनफाइनाइट होंगे एंड इट विल नॉट ओबे द आर एच टेबल. सो ये गलत हो जाएगा. सो प्लीज़ यहाँ तक लिखो, दिस इज नॉट एन ऑड रो 0 कंडीशन. कैसे पता चलता है? बिकॉज एक एलिमेंट प्रेजेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है. Only, if you don't write here 0, it is not a problem. Only the first element is 0. Rest all the elements in that row are non-zero. So I hope there is a difference between odd row 0 and this case. So this is a special case. अगर इतना लिखा है तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. इफ एनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है. इफ एनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम बिकम्स 0, if any element of the first column becomes 0 and without ORZ condition, ये ऑड रो 0 कंडीशन नहीं है, and without ORZ condition, then all the elements of the next row will become infinite. अभी हमने देखा था ना, infinite बन गए थे. Then all the elements of the next column will become infinite. Write down second point. Hence the route table will be eliminated. Write down third point. फिर ये कैसे सॉल्व करते हैं? Then how to solve this? So write down the third point. To extend the routes table, we replace that 0 with some variable. We replace that 0 with some variable. We replace that 0 with some variable and then proceed the routes table. Right? fourth या fifth point लिख लो. And after completing the routes table, we again replace that variable with 0. We again replace that variable with 0. We again replace that variable with 0. We again replace that variable with 0 in the entire route table. So these are four or five points with respect to this special case. Now let us discuss the points. क्या क्या लिखा था?
तो अगर पहले कॉलम में कोई जीरो आता है, फर्स्ट एलिमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का कोई भी एलिमेंट जीरो होता है एंड उसके बाकी के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे देखो ना, ये तो हो गया जीरो एंड उसके बाकी के रो के एलिमेंट्स नॉन जीरो है, then you should understand it is the special case of Routh table. And as I told you, as I showed you, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे फिर? इनफाइनाइट होंगे, बाकी के एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, देन वी कैन नॉट प्रोसीड द राउट एंड द राउट टेबल विल गेट एलिमिनेटेड। तब क्या करना है हमको? तब क्या करना है हमको? यस, आपको नया टेबल बनाना है, आपको नया टेबल बनाना है। आई विल मेक चेंजेस हियर ओनली, यू हैव टू मेक अ न्यू टेबल। What you have to do, replace that zero with some variable. Yes, replace that zero with some variable. Which variable? Now all the books says replace that with epsilon. You can use any variable, alpha, beta, gamma, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन सारे books use करते हैं epsilon. So I'll replace this variable by epsilon. तो epsilon ना मैंने लिखा था, बाद में हम उस वेरिएबल को, बाद में वी पुट दैट वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो अगेन। द लास्ट पॉइंट विच आई हैव गिवन यू, इट सेज अगेन एट द एंड ऑफ द राउट, अगेन वी हैव टू रिप्लेस दैट वेरिएबल विथ जीरो ओनली। सो व्हाट आई डू, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो एंड इट इज एप्सिलॉन। यस, ये वेरिएबल कौन सा है? I'll write this, limit epsilon is tending to zero and वो वेरिएबल है epsilon itself. So I've replaced that zero with a variable epsilon by limit epsilon is tending to zero, and then we can proceed our Routh table. S raised to 1, 4 into epsilon, 4 epsilon minus 8 to the 16 divided by epsilon. So ये आएगा यहाँ पे, so it is 4 epsilon minus 16 upon epsilon. Right, very clear. Then you have to find this variable. So it is, ये जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो ही आएगा, राइट। लास्ट का क्या आएगा? एस एस टू जीरो, 4 epsilon minus 16 अपॉन epsilon इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय इससे करना है। अगेन आई शोड यू, अगर जीरो होगा तो लास्ट ये जो 8 है वही नीचे आएगा, ये जो लास्ट टर्म है 8 वही नीचे आएगा। सो लास्ट टर्म विल बी 8, सो लास्ट टर्म विल बी 8, सो लास्ट टर्म विल बी 8। सो ये था राउथ टेबल। नाउ फाइंडिंग द स्टेबिलिटी, How to find the stability? Check the first column. Check the first column. Sign changes कितने देखो? Yes. First is +1. Second element is +2. Third element is limit epsilon tending to 0, and it is epsilon is some positive value, you can see some positive value. Then we have 4 epsilon minus 16 upon epsilon, and then at last we have 8, and then we have 8. Now see here, just see here. Yes, how to solve this? Just see here. सबसे पहले
हमने वेरिएबल पुट किया एप्सिलॉन, we have put the variable epsilon and then we have proceeded to find the route table, और हमने सारा route table बना लिया है, right? लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था, now replace that variable means epsilon with zero value. ओरिजिनल वैल्यू जीरो था ना उसका, तो रिप्लेस दैट एप्सिलॉन विथ जीरो वैल्यू. नाउ सी हियर व्हाट विल हैपन, नो चेंज, +1 का +1, यहाँ पे कोई एप्सिलॉन नहीं है तो +2, यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो इट विल बिकम 0. सो +1 +2 0, 4 एप्सिलॉन -16 अपॉन एप्सिलॉन, पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, 4 into 0 is 0, -16 upon 0, yes, -16 upon 0, 4 into epsilon, epsilon की वैल्यू 0 है तो 4 into 0 is 0, -16 upon epsilon, लेकिन epsilon 0 है, -16 upon 0 is how much, infinity. Since it is -16 upon 0, so minus infinity. So minus infinity. I hope it is clear. Last 8 का 8 as it is, 8 का 8 as it is. So पूरा फर्स्ट कॉलम हमको मिल गया है. क्या किया है, 0 को पहले हमने रिप्लेस किया है by a small positive value, say some by a variable, some epsilon. फिर हमने routes table पूरा किया है. We have completed the routes table. Then what we have done, we have replaced that variable with 0 again. We have replaced that variable with 0 again, so we have got this value. Then we have got this value. Now it is very easy, the basic things. Now it is very easy, the basic things. +1 to +2, no change. +2 to 0, no change. Sign change नहीं हुआ है ना, 0 है. 0 to -infinity, so change हुआ है. And from +infinity to +8, there is again change. From -infinity to +8, there is a change. So, दो changes है. Two changes means 2 poles on right hand side of S plane. So 2 poles on right hand side of S plane. So what we can write? So we can write total number of poles, I guess it is 4, s की पावर 4 थी, yes. Total number of poles on right hand side of S plane on RHS. कैसे फाइंड करते हैं, how many time sign change have occurred in the first column of routes table. So we have just seen 2 बार sign change हुआ है, 2 बार sign change हुआ है, so 2 poles on right hand side of S plane. Total number of poles on imaginary axis, 0. ROZ ORZ condition तो कहाँ है, no any ORZ condition, तो 0. No any ORZ condition, so 0. Total poles on left hand side of S plane. टोटल पोल्स कितने, 4 है, उसमें से 2 है ऑन राइट हैंड साइड, इमेजिनरी पे 1 भी नहीं है, तो बच्चे कितने, 2, तो वो 2 होने चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. सिस्टम स्टेबल, अनस्टेबल, यस. If you have a single pole on right hand side of S plane, it makes system unstable. So we have 2 poles on right hand side. So write down the answer. The system is unstable system. System कैसा है? System is a unstable system. System is a unstable system. So by this example, we have got an idea about the special case in Routh-Hurwitz table. क्या था वो? अगर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाता है, then we should replace that 0 with some variable.
I have taken epsilon. All the books follows epsilon. So I have taken a variable epsilon. After taking that epsilon, you have to proceed for the RH table. आपको proceed करना चाहिए for the RH table. Then what you have to do? You have to write the first column. पूरा first column लिखना है आपको. And जहाँ जहाँ पे आपने epsilon लिया है वहाँ पे you have to put the value of epsilon again back to 0. Again you have to put the value of epsilon back to 0 and just find out what are the elements of the first column. हमारे elements क्या आए थे? +1, +2, 0, -infinity and +8. We have two sign changes. We have two sign changes which indicates two poles on the right hand side of S plane. Total 4 poles. Highest power of S is 4. So total 4 poles. उसमें से 2 poles on right hand side of S plane. No any poles on imaginary axis. Why? Because odd row 0 condition थोड़ी ना हुआ है यहाँ पे. There is no any odd row 0 condition. So बच्चे 2 poles, वो 2 poles होने चाहिए on left hand side of S plane. Sir, can you find the exact location? No, we can't find the exact location. Exact location is only possible. Exact location is only possible when we have odd row 0 condition. When we have odd row 0 condition. So with this example, we have studied all the basic concepts of Routh-Hurwitz criteria. If you're following all the lectures, if you're writing down all the notes very neatly and clearly, and if you're going through the videos very carefully, I can assure you, you can solve any question asked on Routh-Hurwitz stability criteria.